again is a kind of dosage form. It is again a solid unit dosage form. तो यूनिट मतलब जैसे आप टैबलेट लेते हो 1 टैबलेट 2 टैबलेट, तो उस तरीके से आपका सपोजिटरी एक डोसेज फॉर्म है, सॉलिड डोसेज फॉर्म और सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म मेड बाय मोल्डिंग ओवर हियर, नॉट बाय कंप्रेशन. नाउअडेज कंप्रेशन से भी बनते हैं but mostly it is made by molding. Okay, so suppositories. So first of all, what do you mean by suppository? Again, suppositories, they are nothing but the solid dosage form intended insert in the various body cavities. Suppositories again a unit solid dosage form made by molding, and nowadays it can be made by compression also, and it is intended for use or insertion or to place in the different body cavities. So like rectum is there, then your rectum is there, then vagina is there, then urethra is there, then माउथ इज देयर, डेंटल कैविटी इज देयर. ओके, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ सपोजिटरी आपका रेक्टम में या फिर वेजिना में ही यूज करते हैं. सपोजिटरी आपका रेक्टम के लिए भी होता है, वेजिना के लिए होता है, यूरेथ्रा के लिए होता है, उसके बाद में माउथ के लिए भी होता है. ओके, देन डेंटल कौन सा अवेलेबल, डेंटल कौन सा जो वन ऑफ द टाइप ऑफ सपोजिटरी. Suppositories is a unit dosage form intended to use in the rectum or vagina, and to some extent urethra, mouth and dental cavity. But why there is need of this suppository? आपके पास टैबलेट है, कैप्सूल है, सस्पेंशन है, इमल्शन है, पेरेंटल प्रोडक्ट है, इंजेक्शन है, तो आपको ये सपोजिटरी का जरूरत क्यों पड़ा? So why there is need of suppositories? So what was the reason, exact reason? Reason ये था, so there was a lot of problems, there was a lot of disadvantages of oral therapy. So in 18th century there was a lot of disadvantages of oral therapy, oral tablet over oral dosage. So in the this suppository was mostly used dosage form. This suppository was the most commonly used dosage form in the 18th century in the Europe and Central America. So Central America और यूरोप में ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला डोसेज फॉर्म था 18th century, because to counter or to prevent the disadvantages of your oral route. So oral route से जो disadvantage होता है, so उसको कम करने के लिए this suppositories dosage form was used commonly in 18th century in the Europe as well as Central America. Remember what is suppositories? Unit dosage form which are meant for insertion or to place or to use in the various body cavities like rectum, vagina, urethra, dental cavity, then mouth cavity, etc. Okay, or ear cavity also. Remember over here, as it is question was there, vaginal suppositories are known as a pessaries. Vaginal suppositories are also known as a pessaries. Okay, there was a question as it is. Now again, suppositories. Okay, suppositories, those are used for the rectum or anal canal. So anal canal or rectal suppositories, they are around 2 grams in the weight, and they are of a torpedo shaped. टॉर्पेडो देखा होगा आपने, कुछ जो सबमरीन्स होते हैं उसमें टॉर्पेडो होता है. टॉर्पेडो इज नथिंग बट द एक काइंड ऑफ वेपन. सो इफ यू हैव सीन वन मूवी नोन एज गाजी अटैक, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, इट्स अ वेरी गुड मूवी. गाजी अटैक आपका हिंदी का मूवी है, मतलब अपना अपना बॉलीवुड का मूवी है. सो गाजी अटैक में देखो टॉर्पेडो वगैरह होता है. सो रेक्टल सपोजिटरीज दे आर weighing around 1 to 5 gram, 1 to 5 gram. Okay, most commonly 2 or 3 gram suppository are used, but in case of children 1 gram suppository is also available, and they are available as a oval shape or torpedo shape. Torpedo मतलब क्या, you can see over here one shape is there, ये जो है it is known as a torpedo shape. So torpedo. Then vaginal suppository, they are known as a pessaries. Vaginal suppository can be available in a range of 2 gram to 7 gram. 2 ग्राम से लेके 7 ग्राम तक सपोजिटरी आता है. मोस्टली in case of vaginal suppository, what kind of drugs are here? In case of vaginal suppository, mostly drugs like your antibiotics, antifungal, antibacterial drugs, they are present, anti-inflammatory drugs. So those drugs are present in the vaginal suppository. In case of rectal suppository, what kind of drugs are present? In case of rectal suppository, mainly laxative drugs are present. Okay, laxative drugs and some treatment for hemorrhoids. Okay, in case of rectum. रेक्टम में सपोजिटरी में कौन से ड्रग रहते हैं नॉर्मली, कि जो लैक्सेटिव ड्रग होते हैं वो होते हैं, और ड्रग दोज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमराइड्स, दोज आर देयर. इन केस ऑफ वेजिनल सपोजिटरी, एंटी फंगल ड्रग्स,
then antibacterial drugs, sometimes anti-inflammatory drugs, sometimes steroidal drugs are also there. Nowadays, some prostaglandin analogs are also used in the vaginal pessaries. Now, next kind of suppository is a urethral suppository. So, suppository which are used in the urethra, they are known as a bogies. They are known as a bogies, urethral bogies. They are pencil shaped and they are pointed at one end, and they may be up to 4 gram. The length will be around 100 to 150 millimeter in the length. You can say it is a urethral bogies. Okay, urethral bogie. A pencil shaped होता है. So there are different shapes of your suppository: oval shape, round shape, oval shape. So mostly this is known as a tablet suppository. Oval shape, ये flat वगैरह. It is known as a tablet suppository. Normally suppository will look like this, torpedo and all. This is known as a rectal suppository. Now, okay. Now in case of oral route of administration, oral से जब आप कोई tablet वगैरह लेते हो या फिर कोई dosage form लेते हो oral से, so what will happen? So it will be absorbed into the systemic, it will be absorbed through GIT and in the venous blood, and that venous blood is carried to a liver by portal vein. So in that oral route, there are chances of drug being metabolized in the liver. That is known as the first pass effect or first pass metabolism. But in case of rectal route, okay, in case of rectal route, what will happen? So around in case of rectal route, around 50%, there are only 50% chances of drug will be metabolized in the first pass metabolism if you use a rectal route. So absorption of drug from your rectal route, absorption of drug from rectal route. Okay, so you can see over here. Okay, so it is known as your it is known as your whole interon. Interon means intestines. Okay, so stomach, then into small intestine and large intestine. So this one is known as rectal canal. This part is known as anal canal. So in this part there are two types of vein. So first one is known as a superior hemorrhoidal vein. Second one is known as inferior hemorrhoidal vein. So superior hemorrhoidal vein or inferior hemorrhoidal vein. So the drug which are absorbed by inferior hemorrhoidal vein, which is carried to a directly inferior vena cava. That is venous blood. Okay, that is a systemic blood. So whatever drug is absorbed by inferior hemorrhoidal vein, that is carried to directly into systemic circulation. Whatever drug which is absorbed through this superior hemorrhoidal vein will be carried to a liver and will cause first pass metabolism. तो रेक्टल रूट में क्या होता है कि 50% चांसेस है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का. ओके, या 50% नहीं है. तो वो किस पे डिपेंड करता है कि आपने सपोजिटरी कितने अंदर तक प्लेस किया है. अगर आपने सपोजिटरी बहुत ज़्यादा अंदर नहीं प्लेस किया है, so that will be dissolved here and that will be absorbed by inferior hemorrhoidal vein and which will be carried to a systemic circulation. If you place suppository to a upper part of rectum, so that will be absorbed by superior hemorrhoidal vein and will be carried to a liver for metabolism. तो inferior hemorrhoidal vein जो है उसमें जो भी ड्रग एब्सॉर्प्शन होता है वो फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं दिखाता, और जो superior hemorrhoidal vein है उससे जो होता है वो फर्स्ट पास इफेक्ट दिखाता है. So absorption from inferior hemorrhoidal vein is carried directly to a inferior vena cava. Okay, inferior vena cava, and absorption from superior hemorrhoidal vein that is carried to a liver. याद रखो यार. So absorption from inferior hemorrhoidal vein from rectal area is carried to a directly into inferior vena cava, that is a systemic circulation, and superior hemorrhoidal vein it is carried to a liver. Okay. So whatever drug is absorbed from inferior vena cava, that drug is going intact in the systemic circulation without any metabolism. So that's why you can say by using rectal route you can prevent the first pass effect up to some extent. So that depends on the position of tablet or rectal suppository placed in the rectum. So now rate limiting step in the absorption of drug through suppository is nothing but the partitioning of drug between melted base and intestinal fluid. So partitioning is the rate limiting step for the absorption of drug through rectal route or suppository. Now this suppository they are made by using suppository bases. There are different suppository bases like cocoa butter is there. Previously before 18th century they was using different mixture of your
waxes and fats. Fats and waxes, they were used for making suppository, but after that there was an introduction of cocoa butter, and after that cocoa butter replaced all the waxes and all that. Then cocoa butter suppositories was become famous. Now after that there is a different suppository pieces were synthesized. Okay, so cocoa butter suppository is there, glycerol-gelatin suppository is there, then polyethylene glycol suppository known as a macrogol. Macrogol base is there, then waxes are there. Okay, so these are the different bases like cocoa butter, then glycerol-gelatin suppository, then macrogol. Okay, waxes, etc., etc. Now there should be some ideal qualities of suppository base. Those are utilized for the making your suppository. Suppository base का specification होना चाहिए. So mostly that fatty base, जो fatty base है उसका ज़्यादा specifications होता है. So suppose this specifications of suppository base, इसके ऊपर क्वेश्चन कम से कम 2-3 बार आ चुका है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट. So specifications of suppository base. suppository मतलब होता क्या है कि suppository में क्या है कि suppository क्या होता है exactly. So you have your active drug that is being melted with the suppository base, and then that whole content is solidified. कोका बटर लो डिजायर्ड क्वांटिटी का, उसको हीट करो लेस देन 35 डिग्री सेल्सियस, वो मेल्ट हो जाएगा, उसमें ड्रग ऐड करो और बाद में उसको जो मोल्ड्स होते हैं मोल्ड्स में पोर करो, और आपको एक 1 ग्राम का मोल्ड होता है, 2 ग्राम का मोल्ड होता है, 5 ग्राम का मोल्ड होता है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मोल्ड्स. ओके, तो वो आपको सपोजिटरी मिल जाएगा. सो व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ सपोजिटरी. तो इसमें क्या है कि ड्रग इज प्रेजेंट विद द melted base in case of suppository. So specifications of suppository bases. As I have told you, there are different kind of suppository bases which are used. Cocoa butter is the first one. Second one is a glycerol-gelatin. Third one is a macrogols. Fourth one is a different waxes. Okay. So origin and chemical composition. So depending upon the origin and chemical composition of suppository bases, there are 3 type of suppository bases. Okay. So natural, then synthetic, natural suppository base, then synthetic suppository base, or modified suppository bases. Okay. Now they should have certain specifications. First one is a melting range. ठीक है, suppository जो base है उसका melting range होना चाहिए. अगर suppository बनाया आपने और आप वो melting melt ही नहीं हुआ आपके बॉडी में, जैसे suppository लिया और rectum में insert किया, अगर वो melt नहीं हुआ वहाँ पे, so अगर वो melt नहीं हुआ तो drug release कैसे होगा? So it should have melting range within a certain temperature. So melting range, it should have melting range in the range of body temperature only. Melting range body temperature का जो temperature होता है 37-38 डिग्री सेल्सियस, उसमें ही उसका melting range होना चाहिए. So ideal suppository base should have melting range in the range of body temperature, that is 37-38 degrees Celsius. Now melting range determination is carried out by, this Wiley melting points, capillary melting points, and softening points of your suppository base. So melting range can be measured by melting Wiley melting point Wiley melting point apparatus, then capillary melting point, and or by softening. So these are the USP determining method for melting characteristic of base. So melting range of suppository base can be measured by different techniques like Wiley melting point, capillary melting point, softening point, or incipient point, thaw point, etc., etc. To know the melting range of your suppository base. Now next important point is the solid fat index. This was question in GPAT 2019. Solid fat index is related with one of the following dosage form. It is related with the suppository. It is related with the suppository base. Okay. Solid fat index. So if you plot a graph, आपने अगर ग्राफ बनाया, किसका ग्राफ, कि ग्राफ ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉलिड वर्सेस टेम्परेचर, सपोजिटरी बेस जो होता है आपका, तो कितना परसेंट सॉलिड है, जैसे टेम्परेचर होता है इंक्रीज होता है कितना परसेंट सॉलिड रहता है. तो इनिशियली अगर टेम्परेचर नहीं तो 100% सॉलिड रहेगा. जैसे आप 10 डिग्री 20 डिग्री इंक्रीज करेंगे 30 डिग्री तक मेल्ट नहीं होगा. ओके, लेकिन जैसे 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर क्रॉस हो जाएगा आपका बेस मेल्टिंग होना चालू हो जाएगा. सो सॉलिड कंटेंट कम होना चालू होगा. ओके, सो फ्रॉम द ग्राफ ऑफ percentage solid versus temperature, you can determine the solidification and melting range of suppository bases as well as molding characters of suppository base, surface feel and hardness of base. कितना अगर आपका suppository base 10 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ही अगर आपका मेल्ट होता है, so that will form a very brittle suppository.
So base with a sharp drop in a solid with the temperature can prove brittle if molded too quickly. Solid fat index is measured by or it is determined by डायलेटोमेट्री. इसके ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है. सॉलिड फैट इंडेक्स इज मेजर्ड बाय डायलेटोमेट्री. इसके ऊपर अगर if you want to read more regarding dilatometry you can read from lab note. Hydroxyl value. Okay, so what is hydroxyl value? So mainly it is for the oily base, waxy base. Okay, so it is a measure of unesterified position of triglycerides on a molecule. तो ये जो कोका बटर होता है या फिर जो भी सपोजिटिव बेस है मैक्सिमम ये ऑयली बेस होता है. तो इसमें क्या रहेगा, ट्राइग्लिसराइड का कंटेंट रहेगा. So hydroxyl value indicates the unesterified position on hydroxyl molecule. So what is triglyceride? Is a ester of glycerol with a fatty acid. Fatty acid जो है अपन ने देखा है मैंने डिस्कस कर दो लिपिड्स. सो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, उसके तीनों पोजीशन पे क्या होता है, एस्टरिफिकेशन होता है विद द एसिड. ओके, जैसे लाउरिक एसिड, कैप्रिक एसिड, टेकेनोइक एसिड एक्सेट्रा. So that is a triglyceride. Tri means 3, glycerides means glycerin plus oil. Okay. So unesterified portion of glyceride molecule that will replace the mono or diglyceride contained in the fatty base. That is the hydroxyl value. Now what is the saponification value or solidification point? Now next one is solidification point. So time required for solidification of base when it is chilled into mold. तो जब आप मेल्ट करोगे उसको और पोर करोगे मोल्ड में तो कितना टाइम लगता है उसको सॉलिडिफाई होने के लिए. दैट इज अ सॉलिडिफिकेशन पॉइंट. टाइम रिक्वायर्ड टू सॉलिडिफाई बेस व्हेन इट इज चिल्ड इनटू द मोल्ड. सॉलिडिफिकेशन टाइम. सैपोनिफिकेशन वैल्यू. नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री एसिड एंड सैपोनिफाइड and to saponify the esters containing to in the 1 gram of fat. Saponification. So that is the number of milligram of KOH required to neutralize the free acid present in the 1 gram of fat. Number of milligram of KOH required to saponify the ester present in the 1 gram of fat. Now iodine value. Number of grams of iodine that is absorbed by 100 gram of. तो जो फैटी बेस है उसमें आयोडीन कितना एब्सॉर्ब होता है पर 100 ग्राम. दैट इज नोन एज आयोडीन वैल्यू. Remember, iodine value is indicator of unsaturation. जितना ज़्यादा unsaturated fatty acid होगा उतना ज़्यादा उसका आयोडीन वैल्यू होगा. याद रखो ये एक डबल बॉन्ड के वहाँ पे एक आयोडीन जाके बैठेगा. जब डबल बॉन्ड रहेगा फैटी एसिड में तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल आयोडीन का जाके. सो आयोडीन वैल्यू इज इंडिकेटर ऑफ योर unsaturation. Next one is the water number. So number of grams of water that is absorbed by 100 gram of fat, that is known as a water, or grams of water that can be incorporated into 100 gram of base. 100 gram of is a water number. So ideal suppository should have higher water number. Ideal suppository should have less iodine value. Ideal suppository should have less saponification value. Ideal suppository will have high solid fat index, etc. etc. These are the ideal properties of suppository base. Okay? Then acid value. Number of milligrams of KO is required to neutralize the free fatty acid present in the 1 gram of fat. Low acid value will lower will be the acid value, better will be the suppository base. So suppository base का acid value कम होना चाहिए तो वो suppository base अच्छा रहेगा. These are the some important point. याद रखो melting range क्या है. Solidification index is related with the suppository base. क्वेश्चन आ चुका है. वो saponification वैल्यू के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है. आपका बायोकेमिस्ट्री में भी हो चुका है. आयोडीन वैल्यू भी हो चुका है. यहाँ पे वाटर नंबर याद होना चाहिए आपको. Lower will be the acid value of your suppository base. Good will be the suppository base. Qualities of ideal suppository base. तो equilibrium crystallization equilibrium होना चाहिए उसका. It should be non-irritant, compatible with the most of the drug. Should not have metastable form. Metastable मतलब अगर crystallize होता है, अगर metastable crystal form आता है तो वो कभी भी melt हो सकता है. आपका suppository body में टिकेगा ही नहीं. It should have wetting and emulsifying properties. Ideal suppository base. Okay, so for ideal suppository base, acid value should be in the limit of less than 0.2. Saponification value should be between 200 to 240. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. What will be the ideal saponification value for? What will be the saponification value for ideal suppository base? That is a 200 to 240. So acid value क्या होना चाहिए? Less than 0.2. Okay, saponification value should be between 200 to 240.
So acid, okay. Then ideal suppository base should have high water number. Okay, ideal suppository base should have solidification point should be small. Okay, so solidification point should be small and solid fat index curve should be sharp. These are the ideal properties of suppository base. Okay. Now classification of suppository base. There are three classes: oleogenous base, hydrophilic base, and synthetic emulsifying bases. So oleogenous base मतलब oil containing bases कौन कौन है? कोका बटर है आपका, emulsified कोका बटर है, hydrogenated oils. हाइड्रोफिलिक कौन है? ग्लिसरोजिलेटिन, देन सोप जिलेटिन एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल जो है उसको मैक्रोगॉल बोलते हैं. मैक्रोगॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल इज आल्सो नोन एज अ मैक्रोगॉल. ओके, याद रखो, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल दे आर आल्सो नोन एज अ मैक्रोगॉल्स. There are three bases: oleogenous bases, hydrophilic bases, synthetic और emulsifying bases. So oleogenous में आता है आपका कोका बटर, emulsified कोका बटर, उसके बाद में हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, और हाइड्रोफिलिक में आता है ग्लिसरोजिलेटिन, सोप ग्लिसरीन, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है. सिंथेटिक में आता है, सिंथेटिक में क्या आता है देखो, विट्सपॉल, मासा स्ट्रेनियम, मॉसोफॉल एंड मैक्रोगॉल. ओके, सो दीज आर सिंथेटिक. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंथेटिक बेस फॉर सपोजिटरी, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल बेस, ऐसा. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग ओवर हियर. सो सपोजिटरी व्हिच इज मेड बाय glycerogelatin base, suppository which is made by glycerogelatin base, they will have a transparent translucent look. So there was a question: transparent translucent suppository is made by one of the following suppository bases. ऑप्शन में आएगा आपको कोका बटर, विटोप्सोल, ग्लिसरोजिलेटिन एक्सेट्रा, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल. So suppository which is made from the glycerin and glycerogelatin base, it will look like a transparent translucent. Different suppository bases. So first one is the coca butter. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है. So coca butter is the most widely used suppository base. It will melt at a body temperature, but it has a tendency to rancidity and liquefy with certain drugs. तो कोका बटर जब आप यूज करते हो सपोजिटरी बेस में, तो ये आपके बॉडी टेम्परेचर पे ही मेल्ट होता है और रिलीज करता है ड्रग. लेकिन इसको रेंसिडिटी होता है, रेंसिड बनता है ये, बिकॉज इट हैज अनसैचुरेशन इन द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सो रेंसिडिटी होता है उसका, एंड इट कैन लिक्विफाई विद सर्टेन ड्रग. सो इट विल बिकम यूटेटिक along with a few drugs. Then again, coca butter will exhibit polymorphism. Coca butter will exhibit polymorphism if it is heated above 36 डिग्री सेल्सियस. तो जब आप सपोजिटरी बनाते हो, आपने कॉलेज में बनाया होगा सपोजिटरी. I don't know whether you are dispensing pharmacy or not. So when we was in the college, we have made this suppository. So if you heat the cocoa butter base above 36 degrees Celsius, it will crystallize in a different crystalline form. So that is nothing but the polymorphism. So each and every polymorph will have different physicochemical properties. So it will exhibit the polymorphism when it is heated to above 36 degrees Celsius. And if it is chilled or it is cooled, its solidification below 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसके बाद में भी पॉलीमॉर्फिज्म दे सकते हैं. तो उसको ज़्यादा हीट भी नहीं करना है और ज़्यादा कूल भी नहीं करना है. तो 35 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है. ओके, और कूलिंग के लिए आपको 25-30 डिग्री सेल्सियस पे कूल करना है. सो रिमेंबर, सो इफ यू हीट और कूल दिस कोका बटर, if you heat above 36 degrees Celsius, and if you cool this cocoa butter less than 15 degrees Celsius, it can crystallize in a different crystalline form. It will show polymorphism. So it can crystallize in alpha form, beta form, delta form, okay, gamma form, and delta form. So out of that, I have listed 3 over here. So remember, so alpha crystalline form of this cocoa butter will melt at 24 degrees Celsius, and it appears when you cool this cocoa butter less than 0 डिग्री सेल्सियस. ये कोका बटर को आपने अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे कूल किया, तो उसका जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म है वो अल्फा बन जाता है. वो क्या होता है, 24 डिग्री सेल्सियस को ही मेल्ट होता है. तो मान लीजिए कि आपने सपोजिटरी बनाया है, उस टाइम पे आपने बनाया तो टेम्परेचर लेस देन 35 पे, लेकिन आपने क्या किया, उसको बनाने के बाद इमीडिएटली वो ड्राई को फ्रिज में रख दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो क्या होगा, कोका बटर विल फॉर्म अल्फा फॉर्म. अगर आपने वो सपोजिटरी यूज किया, सो एज अल्फा फॉर्म विल मेल्ट एट 24 डिग्री सेल्सियस,
तो वो जब जैसे ही बॉडी में आप इंसर्ट करोगे तो वहाँ पे रहेगा ही नहीं, वो निकल के आएगा बाहर। बस अल्फा फॉर्म है उसमें, 24 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा, आपके हाथ में ही मेल्ट हो जाएगा। अगेन बीटा फॉर्म इज नोन एज अ स्टेबल फॉर्म। सो बीटा फॉर्म ऑफ योर कोको बटर इज नोन एज बीटा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म इज अ स्टेबल वन। रिमेंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। Which one of the following as a polymorphic form of cocoa butter is stable? So beta form is stable, which will melt at 35 degrees Celsius. Gamma form will melt at 18 degrees Celsius. It is also unstable. Okay, it results from pouring of cool cocoa butter at a 20 degrees Celsius. It solidify into container which is cooled at a deep freeze temperature. उसके बाद में एक डेल्टा फॉर्म में आता है. So there are four isomeric form. There are four polymeric form: alpha, beta, gamma, and delta. So remember, beta 1 is nothing but the stable one. Formation of unstable form of cocoa butter can prevent the seeding melting within the range. Formation of unstable polymorphic form of cocoa butter will become supposedly useless. तो अगर polymorphic form बीटा के बजाय दूसरा बन गया तो supposedly क्या होगा, useless हो जाएगा. Now next suppository base is a polyethylene glycol, PEG, polyethylene glycol, or they are known as a carboxyls. Polyethylene glycol, carboxyls. So again, wide range of melting point इनका and solubility. They are not hydrolyzed or deteriorate. Higher will be the molecular weight of polymer. Brittle will be the base. This is regarding the carboxyls. Higher will be the molecular weight of polymer. Brittle will be the base. Then next one is a glycerol-gelatin base. So remember glycerol-gelatin base. So it is a water miscible base, glycerol-gelatin base. Water miscible है ये, and it consists of glycerin 70% and gelatin 14% and water quantity sufficient. Suppositories formed by this suppositories made from this glycerol-gelatin base, they will look like a jelly-like consistency. Will look transparent, transparent, translucent jelly-like consistency. आपने जेली खाया होगा, जेली, तो उसके जैसे ही ये बनेगा सपोजिटरी. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरी बनाते कैसे है उसका. तो देयर आर डिफरेंट मेथड. सो इन द ओल्ड डेज, पहले जमाने में क्या होता था कि सिर्फ मोल्डिंग से बनाया जाता था. मोल्डिंग मतलब क्या, यहाँ पे साचा रहेगा उसका, कोई मोल्ड्स रहेंगे. यू माइट हैव सीन द सपोजिटरी मोल्ड. सो देयर आर डिफरेंट मेथड. सो molding, first method is molding. In that also you have two methods: hand molding and pour molding. So hand molding means what? It is the oldest method, rolling of well blended suppository base with the drug. ठीक है, हाथ से जैसे सेवैया हाथ से बनाते हो वैसे ही आपको ये. now pour molding, you might have done this process in the lab. ठीक है, so you have to take a required quantity of base, you have to melt it, you have to add the drug, and you have to pour the melted base in the mold, and you have to cool that mold so that you will get a suppository. You have to lubricate that mold before pouring the molten mass of your. So उसको पहले lubricate करना पड़ता है, उसमें पैराफिन ऑयल यूज करना है मोल्ड्स में. नहीं तो क्या होगा कि आप क्या करेंगे, उसको lubricate नहीं करेंगे और उसमें डालोगे वो सपोजिटरी बेस, वो बन तो जाएगी सपोजिटरी लेकिन निकलेगी नहीं वहां से. So for removal you have to lubricate. Then nowadays suppository also made by compression. This is a tablet or another tablet. Compressed tablet as a suppository. So mostly it is used. It is a for a vaginal suppository. Compressed tablets. Then nowadays automatic molding machine is also there, like a rotary molding machine. Then layered suppository. जैसे लेयर बाइलेयर टेबलेट होता है कि एक लेयर और दूसरा लेयर. So to avoid the incompatibility, outer shell will melt at this temperature 37-38 and inner core will melt at 35 degrees Celsius. बाइलेयर मतलब क्या, यहाँ पे दो लेयर रहेंगे. ठीक है, तो ये क्या करना है आपको, एक सपोजिटरी बेस जो है जो 37-38 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है, वो सपोजिटरी से हाफ सपोजिटरी बनाना है. और हाफ सपोजिटरी किससे बनाना है, दूसरे बेस से जो 35 को मेल्ट करता है. सो लेट फॉर एग्जांपल, अगर आपको 20% ड्रग इमीडिएटली ये करना है और बाकी का ड्रग बाद में ही करना है, मेल्ट रिलीज करना है, यू कैन यूज लेयर्ड सपोजिटरीज, रैप्ड सपोजिटरीज. आजकल ये ऐसे ही अवेलेबल है, ऐसे रैप्ड सपोजिटरी. सो लिक्विड ब्लेंड consisting suppository base and drug, it is poured directly into a wrapper and it is substituted to storage in the cold place. So there is one suppository available in the market known as a Dulcolax. Dulcolax नाम का एक suppository available है market में.
that is used as a laxative. So that is a wrapped suppository. वहाँ पे क्या है कि जैसे एल्यूमिनियम फॉइल का रैपिंग होता है, डायरेक्टली उसमें मोल्टेड मास पोर करते हैं और वो स्टोर करते हैं. अगर फ्रिज से बाहर निकलेंगे तो वो मेल्टिंग होता है उसका, बाद में फ्रिज में रखेंगे तो वो सॉलिड होता है. Now problems encountered in the suppository manufacturing कौन से कहते हैं वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, volume contraction. So problem that occurs many this problem occurs with many melted suppository base after cooling the mold. So depending on that, bases are classified as a good mold release and contraction hole problem. So what happens, जैसे आप मेल्ट करके पोर करते हो मोल्ड्स में, तो उसका वॉल्यूम जो है पोर किया तो पोर करते समय तो आपको पूरा दिखता है कि ये डायपोर रबर का है. और जब आप क्या करते हो, जब वो फ्रीज करके निकालते हो तो वो बहुत ही छोटा बन जाता है. दैट इज नोन एज अ वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन. इट इज कॉज्ड बाय mass pulling away from side of the mold. Then contraction or hole formation at the open end of the mold. Undesirable feature result in the lowering of suppository weight and imperfect appearance of suppository. In brittleness, synthetic bases they have a high degree of hydrogenation and high degree of stearate content. Problem is common with them. Okay, so brittle बन जाता है, मतलब जल्दी ही break होता है, वो brittle बनता है. So this problem is also because of the rapid cooling and that result into fractured or brittle suppository. Then hygroscopicity countered with the glycerol-gelatin base, क्योंकि glycerol-gelatin क्या है कि वो absorb करता है moisture. Incompatibility, polyethylene glycol base okay, is incompatible with the many silver salt. So पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल बेस का सपोजिटरी बनाया और सिल्वर आयन के कांटेक्ट में आया तो वो देन डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था एक बार. तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और रिप्लेसमेंट फैक्टर, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू और रिप्लेसमेंट फैक्टर इज रिलेटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग. सो सपोजिटरी, so the amount of drug that is being displaced, so amount of base that is being displaced by the quantity of drug added, that is nothing but the displacement value. So amount of base that is replaced by active ingredient in the suppository is known as a displacement value. Number of parts by weight that replaces the one part of suppository base is nothing but the displacement value. इसका एक इक्वेशन भी होता है आपका यहाँ पे, EF is equal to 100 into E minus G divided by G divided by x plus 1. What is E? It is a weight of pure base. What is G? Weight of suppository, total weight of suppository, x% of drug. मतलब 100 F is equal to F means क्या, replacement factor और displacement value. 100 minus E minus G divided by G into drug dose of drug plus 1. That is a formula. Formula याद रखने की जरूरत नहीं आपको, बस इतना याद रखो, displacement value is related with the suppository. Now bloom, so it is a storage stability problem of the suppository, mostly related with the cocoa butter. Upon storage, there is a formation of white powder deposit on the surface of suppository known as a bloom. So these are the thing about the problems that are occurs in the suppository manufacturing. Now quality control of suppository, last slide. Quality control of suppository. So melting range, I already told you. Okay, melting range or micro melting range is checked by USP disintegration test apparatus. याद रखो इसको, melting range of suppository is checked by USP tablet disintegration test apparatus. Then liquefaction of softening time for rectal suppository, उसका एक apparatus होता है, वो इससे चेक करते हैं. ब्रेकिंग टेस्ट भी होता है. डिसोल्यूशन टेस्ट, जैसे आपका डिसोल्यूशन apparatus होता है वैसे wired mesh apparatus is used. So I'm not going to tell this breaking test in the detail. इसका एक apparatus होता है, बुक में दिया है मैंने. This was regarding the today's session. So we have finished our microencapsulation and suppository from industrial pharmacy. In the next lecture, we'll see